Hi guys, welcome back to my channel. This is Aditya tutorial again, and let's start today's video. Ever wondered what really happens behind the cabin doors? Today I'll reveal 6 cabin crew secrets that airlines never officially tell you. But you will love to know. Let's get started. We know your birthday or special needs before you board. Before the flight, we get a passenger's list showing birthdays, VIPs, or passengers needing special assistance. Second, we notice everything during boarding: your mood, smell of alcohol, or if you're too nervous, because safety is our first job, not just serving food. Third, those tiny mirrors in the lavatory, they're so we can check if passenger looks sick, upset, or if two people sneak in together. 4. The breeze. The breeze position we show in demo isn't just random. It really helps protect your head, neck, as leg during an emergency landing. We can lock the cockpit from the outside. There's a secret keypad, but only if pilot approves it from inside. There are 5 things cabin crew instantly notice about every passenger. Yes, including you. First is your smile as a body language. If you look happy, nervous, or rude, it helps us decide how to approach you. Second, if you smell of alcohol, we must decide if you are safe to fly or need to be reported. This video is from my last Dubai layover when I went to Dubai and यहाँ पे हम लोगों को accommodation में मिला था ये अब 2 BHK फ्लैट कह लो, स्वीट कह लो, अपार्टमेंट कह लो, whatever you want to say, but it was huge and beautiful. सबसे पहले तो एंट्रेंस क्रॉस करते ही सामने एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पे वर्किंग एरिया, आपका वर्किंग प्लेस अलग था और ये साइड में एक रूम था जिसका क्लोजेट एरिया और वॉशरूम सेपरेट था एंड इट वाज ब्यूटीफुल. रूम भी आप देख सकते हो कितना बड़ा है और हर रूम में इंडिविजुअल टीवीज थे, यहाँ तक कि हॉल में भी एक अलग टीवी था. फिर उसके साथ ही एक डाइनिंग टेबल था जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हो. हॉल में हमने काफी चिल भी किया था. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेपरेट बार सेक्शन भी था और यहाँ पे एक छोटी सी किचन भी थी जहाँ पे आपको माइक्रोवेव, डिश वॉशर सब कुछ अवेलेबल था. एंड दिस इज द सेकेंड रूम इन विच आई हैव स्टेड और इसका ये लग्जरियस बाथरूम था, बहुत ही अच्छा. ये पूरा किंग साइज बेड था, बहुत ही प्यारा रूम था.